हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं जेईई एडवांस 2025 के रोटेशनल मोशन के एक क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पेपर 1 का है 2025। क्या क्वेश्चन कह रहा है? द सेंटर ऑफ द डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉलर। ये डिस्क नीचे दिया गया, यहाँ पर एक डिस्क, यहाँ पर इसका रेडियस बोला गया कितना स्मॉलर है, ऑफ मास एम, डिस्क का मास एम है, इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इनसाइड अ रिंग। ये एक रिंग से अटैच्ड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है के इनसाइड अ रिंग, ठीक है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉलर एज शोन इन द फिगर। बोला गया कि रिंग का रेडियस कैपिटल आर है और इस छोटे वाले डिस्क का रेडियस स्मॉलर है। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड ऑन द पेरीफेरी ऑफ द रिंग। और जो स्प्रिंग का एक एंड तो जो है वो इस रिंग से इस डिस्क से अटैच्ड है और दूसरा जो है ना इस रिंग की पेरीफेरी पे अटैच्ड है। बोथ द रिंग एंड डिस्क आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन पे है। इसका मतलब वर्टिकल प्लेन में, इसका मतलब इस डिस्क का नीचे mg का कंपोनेंट लग रहा होगा। द डिस्क कैन ओनली रोल अलोंग इनसाइड पेरीफेरी ऑफ द रिंग विदाउट स्लिपिंग। और जो ये डिस्क है इट कैन जस्ट रोल इनसाइड द पेरीफेरी। बेसिकली कह रहा है कि हाँ, और बोला है विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग हो रही है यहाँ पर, बेसिकली प्योर रोलिंग हो रही है। द स्प्रिंग कैन ओनली बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड अलोंग द पेरीफेरी ऑफ द रिंग। और ये जो स्प्रिंग है ये सिर्फ और सिर्फ इस पेरीफेरी के अलोंग ऐसे और ऐसे कंप्रेस और स्ट्रेच हो सकती है। फॉलोइंग हुक्स लॉ, इन इक्विलिब्रियम द डिस्क इज एट द बॉटम ऑफ द रिंग। बेसिकली कहा गया है कि इक्विलिब्रियम में ये जो डिस्क है ये बॉटम पर है, मतलब अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगा तो ये अपने बॉटम में होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, एज्यूमिंग द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्क। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन और द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क इज रिटन एज, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन बोला गया टी इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा, तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताना है। जब ये बेसिकली इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो फिर यहाँ पर जो होगा ना ये एक टाइम पीरियड से ऑसिलेशन दिखाएगा, तो ऑसिलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। एंड हियर द ऑप्शंस आर गिवन, ये ऑप्शंस हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। फिगर कैसा है देखो, यहाँ पर है ये रिंग के अंदर जो है ना, इधर में थोड़ा छोटा सा डिस्क इसको बड़ा करके बना रहा हूँ, ठीक है, इस डिस्क को बड़ा करके बनाता हूँ। इसका रेडियस मान लेता हूँ स्मॉलर रेडियस है ये, और ये सेंटर है, और ये इसका रेडियस कैपिटल आर मुझे गिवन है, ठीक है। यहाँ पर मेरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मेरा स्प्रिंग इस साइड इस तरीके से अटैच्ड है, इस तरीके से, ठीक है, स्प्रिंग इस तरीके से अटैच था और जो है ऐसा ही है। मैंने क्या किया, इसको जो है ना इस रिंग, इस जो डिस्क है इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेट अस कॉल थीटा, मैंने यहाँ से इधर वर्टिकल प्लेन से इसको थीटा मैंने डिस्प्लेस करा, तो कैसा बनेगा फिगर, तब देखो ऐसा हो जाएगा। ये जो है ये कुछ इधर मान लेता हूँ, इधर आ चुका है, और यहाँ से जो है इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा मान लेता हूँ, और जो स्प्रिंग है वो भी अभी स्ट्रेच हो जाएगी इस तरीके से, स्प्रिंग भी स्ट्रेच हो जाएगा। लेट अस कॉल दिस थीटा। और हमें सवाल में बोला गया है कि ये जो है थीटा इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मतलब थीटा इज कंसिडर्ड एज स्मॉल, सो वी कैन यूज स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन एज इट इज़ नीडेड एनीवेयर, ठीक है। यहाँ पर जो है ये है, और ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस पॉइंट पर इस डिस्क की FBD को ड्रॉ करता हूँ। तो FBD बनाऊँगा तो नीचे की डायरेक्शन में मुझे पता है mg लग रहा होगा, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दिस एंगल विल बी ऑल्सो थीटा, सो देयर विल बी योर mg cos थीटा लगेगा इधर, और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा mg sin थीटा। एंड एज ऑल वी नो दैट द डिस्क इज गोना rotate in this direction, so there will be some forces responsible for the motion of the disk in this direction, and here the friction will act in this direction, because friction always acts opposite to the tendency of motion, and it will show two motions. It will also go like this, and it will also roll about its own axis, so it will also have an angular acceleration, let us call it alpha, and in this direction, not in this direction, because the spring will not, because this will not go more in this direction, it will just return in this direction and will show an oscillation. We don't know it is an oscillation, is it a SHM or not SHM, ठीक है। यहाँ से थीटा है, ये फ्रिक्शन इधर लग रहा था, और साथ ही में ये स्प्रिंग फोर्स भी तो इस डायरेक्शन में लगेगा,
क्योंकि स्प्रिंग अगर स्ट्रेच हुई है एक्स से, तो स्प्रिंग फोर्स भी तो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, एंड लेट अस कॉल इट के एक्स। अगर स्प्रिंग फोर्स को मैं के एक्स कह देता हूँ, तो यहाँ पर इसके इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज लगे, इधर लग रहा है के एक्स, इधर लग रहा है और एम जी साइन थीटा, और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन। तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखूँगा, एंड इसका एक एक्सेलरेशन ए भी मान लेता हूँ इस डायरेक्शन में, तो क्या लिखूँगा, एम जी साइन थीटा प्लस के एक्स माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू इसका मास इनटू इसका लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये थीटा है, ये आ गया। फ्रिक्शन के बारे में मुझे सवाल में कहीं भी कुछ नहीं ऐसा बताया गया था। सो लेट अस एलिमिनेट दिस फ्रिक्शन टर्म। हाउ वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस इफ आई राइट द torque equation. Basically if I write the torque about the center of this disk, इस डिस्क के सेंटर के अबाउट पूरे के पूरे सिस्टम का टॉर्क लिखूँ, सो आई विल मीन बेनिफिट rather than writing the equation of torque about the center of the ring, because if I write the equation of torque about the center, there are many forces which I have to consider in the torque equation, example kx, mg sin theta and friction. But if I write it about the center of the disk, there will be just one force which is gonna be my equation, that is just friction, because all other forces will pass through the axis like kx, mg sin theta, mg cos theta, and also the normal will pass through the center, so they are gonna not in the equation of torque. So I'm writing torque about the center of the disk. How we know that, we know that net torque is equal to I times alpha, and alpha is the acceleration, angular acceleration about the axis. ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स F लग रहा है, तो F इंटू ये हमारा जो है perpendicular distance, the perpendicular distance is the radius of the disk, that is small r, equal to the disk moment of inertia about the center of the disk. It is how much, it is mass into its radius square upon 2 times alpha. Here we're gonna cut this, so the F comes out as m r alpha divided by 2, and we also know that A is equals to r times alpha, not the capital R, because it is the angular acceleration of the disk and it is rotating with alpha, so the equation will be like this, acceleration will be r times alpha just. So F equals to how much, m times r alpha can be replaced by the term A, ma divided by 2. So friction equals to ma by 2. Here we are gonna eliminate the friction by replacing it with the term ma upon 2, and if the ma upon 2 goes on the other side, the equation will become like mg sin theta plus kx equals to 3 upon 2 times ma. I'm gonna show you how it is happening. Here we go with the replacing it. So if we place friction to the other side, the equation becomes like ma plus ma upon 2. This will be mg sin theta plus kx equals to 3 by 2 times ma. Now, as I said sometimes before, that the angle is small, as it is also given in the question that the angle displacement is small, so we can apply small angle approximations. So if the theta is small, then sin theta can be replaced with just theta, also with tan theta, but in case of cos theta is just it is replaced with 1. We can prove the logic with the graph, with using the graph, but no need of doing all these things here. So just I will write it m sin theta as theta plus kx equals to 3 by 2 times mass times acceleration. Now theta, here we go, that there's an angle theta, and there's a motion happening just with this radius like this in this. So the very basic equation, that arc length is equals to radius times theta. Here the arc length is this, I have considered it as x, and the radius is how much, it is just like this, not the whole capital R, it is capital R minus small r, capital R
minus small r times theta. Now the value of theta here comes out as x upon capital R minus small r, that is mg. I'm replacing theta with this value, that is how much, that is x upon capital R minus small r plus kx equals to 3 by 2 times mass into acceleration. Okay, is it correct? Yes. So I am just keeping acceleration one side and sending all the terms on the other side, so we come with acceleration equals to 2 upon 3 m times mgx upon r minus r plus kx. Here I can write acceleration as minus omega. We know that acceleration is equals to minus omega time square times x. First of all, before doing this, if I take x as common, so the equation becomes mg upon r minus r plus k times x. And we know that the acceleration and x are opposite in direction, because the acceleration is in this direction and I have considered the displacement in this direction. So here we go with using a negative sign also, because they are opposite in direction. If I write it in vector form, there will be a negative sign also coming because of their opposite directions. If x is in positive direction, then acceleration will be in negative to the direction of x. So here the acceleration comes, it is, as we can see, that it is linearly varying with the displacement, and we know that this is the condition of SHM. It is, and in SHM, the acceleration can be written as minus omega square times x. So if I replace acceleration with minus omega square times x, so minus omega square times x equals to minus 2 upon 3 m times mg upon r minus r plus k times x. So k ye omega square equals to 2 by 3, and I will send this m on this in this bracket, so the m will be cutted, and k upon m. So the omega comes out as under root 2 by 3 times g by me r minus r plus k divided by, and this is the angular frequency of this comes out as, this is the angular frequency. Now let us match this answer with the given options in the question. So here we go, the first option is correctly matched with our answer, that our answer says that omega equals to under root 2 by 3 times g upon r minus r plus k by m. Yes, it is. Other options are not correct. The first option A. Okay, so that's all for this क्वेश्चन. नो बाद में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू.